Good evening. This is going to be our last session of inequalities maxima minima. We are going to complete around 18 questions, 19 questions in this. Let us get going. So you have roughly 2 minutes to try this question. As a general rule, whenever you see a quadratic kind of equation and whenever you see for real values of x, always solve it through delta. Delta is b square minus 4ac. It must be more than or equal to 0 for real values. If the statement was x is a positive number, positive real number, then we think of AMGM. I have created those questions as well in this class sheet. Right now you have 2 minutes. Try this. 2 minutes आपके पास. Try and complete this current question. So what is being said in this particular question is find the difference between maximum and minimum value of this equation. So if I imagine it equal to k, I'll rearrange it. I'll further transfer everything on one side. Make sure there are no sign mistakes. Now see, this is A, this is B, and this is C. This entire thing is C. ABC of a quadratic equation. We want x to be real. For that, b square, k plus 1 square minus 4 times of A into C. This must be more than equal to 0. Don't perform a square. K plus 1 is common. So you take out k plus 1 common from both brackets. K plus 1 is common. The second bracket becomes minus 4k plus 4 more than equal to 0. That is k plus 1 bracket minus 3k plus 5 more than equal to 0. So now there's a single variable k. There is an inequality.
So you always go back to wavy curve. This will become 0 when k is equal to -1, and this will become 0 when k is equal to 5/3. You look at this, k into minus k, that is minus 3k square. This is a negative sign in front of k square. So minus sign, plus sign, minus sign. We want more than equal to 0. More than equal to 0 तभी होता है. It only happens here between -1 and 5/3. -1 and 5/3. So here the minimum value of k is this entire ratio. This entire ratio is k. Minimum value is this, and maximum value is 5/3. So what is the difference between maxima and minima? Maxima minus minima is 5/3 minus -1. So 5/3 plus 1, that is 5, that is 8/3. Answer option A. Take a minute, copy this down, comment done. At the start of the question I have explained इसमें AMGM क्यों नहीं लगेगा, और rather आपको क्यों नहीं लगाना चाहिए. Complete the writing part. I'll explain you further. Done. Eh? Now see, whenever it says beta real value, real x being real, ये AM GM का question नहीं है. It is not a AM GM question. Whenever it says real value, you should solve it through this. Try to convert it into a quadratic equation of x. For x to be real, delta must be more than equal to 0. ये condition होती है. For AMGM to work, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए. It is a positive variable or a positive real number. Positive आएगा, then we consider AMGM. AMGM जबरदस्ती fit कर सकते हैं, but that's a very risky approach. In some cases, you might be able to find the upper limit maximum using AMGM, but फिर आपको minimum limit नहीं मिलेगा बेटा इस तरीके का. AMGM can be used to find either upper or the lower limit, not both. This I will shift on the opposite side. This will become minus 3y plus 1 x plus 4y is equal to 0. Now this is the term A, term B and term C. अभी क्या करना है इनका? We need to perform the delta वाला part. B square
3y plus 1 whole square minus 4 times of y into 4y more than equal to 0. Now here please observe, ये भी एक square बन गया. It is a 4y square. So 3y plus 1 square minus 4y square. इसको expand करके क्यों time pass करना? You can apply a square minus b square. ये लगा दो आप यहाँ पे. So it will turn into what? It will turn into this plus this. That is 7y plus 1. This minus this. That will be minus y plus 1 more than equal to 0. Now ये 0 किधर होगा? Minus 1 by 7. ये 0 किधर होगा? 1. And when you look at this, what is the value? Minus 7y square. What is the sign? Minus. Minus plus minus. So जो आपका y है, इसका maxima minima will be between 1 and minus 1 by 7. इसके बाहर नहीं जा सकता. तो आपको maximum और minimum दोनों मिल जाता है through this approach. So here the minimum value of y is minus 1 by 7. बट आप ये क्वेश्चन कहीं भी ले जाओ, किन से भी पूछो, AMGM से ही नहीं बनना है. The word used to describe x is it's a real term. It's a real number. तो उस केस में आप क्या करोगे? Always go back to delta. हमेशा वापस डेल्टा की ओर जाना है आपने. Clear example? Comment done. Cool. Moving on. Now, this is a classic example of graph-based maxima minima. So, pehले let me explain you what this notation means. In 8 out of 10 questions, you will not need graph. There is no need of graph. बट जो ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें ग्राफ लगता है. तो आई विल सजेस्ट यू प्रैक्टिस विद ग्राफ फ्रॉम डे 1. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज दिस नोटेशन मीन? इफ आई राइट देयर इज सम फंक्शन which has max written outside and value inside are 3 4, which has max written outside and value inside are value inside are 5 11. It has max return outside and values inside are, let us say, 7 and minus 4. So the idea is, what is the maximum out of these two? 4. So the function will be equal to 4. What is the larger value? 11. It will be equal to 11. At every given point, function will have two values to choose from. दो values हैं, 7 minus 4. Larger कौन सी है? 7. What it means on a graph basis is 0.2 जो रहेगा value यहाँ पे रहेगा और 4 यहाँ पे रहेगा. तो larger select होगा, this will be neglected. Between 0.5 and 0.11,
11 will be selected, 5 will be rejected. Between 0.7 and -4 ये रिजेक्ट हो जाएगा एंड 7 विल बी सिलेक्टेड. क्या बोल रहा हूं मैं आपको, हमेशा ऊपर वाला पॉइंट सेलेक्ट होगा. व्हेन द आउटर वर्ड इज मैक्स, ऊपर का पॉइंट सेलेक्ट होगा. नाउ व्हाट दिस मींस ग्राफिकली इज, देखो आई एम कॉलिंग दिस ग्राफ 1 और y1 लिख दो उसको. ये y1 है आपका. y1 इज इक्वल टू 3x-4. y एक्सिस, x एक्सिस. एज आई एम सेइंग 8 क्वेश्चन बिना ग्राफ के बन जाएंगे, बट 2 ग्राफ मांगेगा, तो ग्राफ से प्रैक्टिस करो. इसको 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू -4. y को 0 पुट करो, x इज इक्वल टू 4/3. दिस इज योर ग्राफ 1. दिस इज 4/3. दिस इज y1. ये पहली वैल्यू है. लेट अस से दिस इज y2. अनदर ग्राफ 2x + 5. x को 0 कर दिया, y इज इक्वल टू 5. y को 0 कर दिया, x इज इक्वल टू -5/2. -5/2. ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा आपका. इमेजिन यहां कहीं पे ये कट करेंगे. थोड़ा और क्लीन कर देते हैं इसको. लेट मी ड्रॉ इट अ लिटिल मोर टिल्टेड. Imagine this is your graph. Imagine this is your graph y1 and this is your graph y2. ऐसा. This is the point where they intersect. यहाँ पे वो मिल गए. Now on the right side कौन सा ग्राफ ऊपर है, y2. y2 is above. ब्लू वाला लाइन नीचे है, तो राइट साइड में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा एनीमोर, क्योंकि आपको मैक्सिमम चाहिए था. ऑन द राइट साइड दिस इज द इक्वेशन. This is the equation. Or on the left side, blue वाला ऊपर है आपका ग्राफ. The blue graph is above. तो इसके लेफ्ट साइड में ग्रीन विल नॉट मैटर. तो आपका जो फाइनल ग्राफ बनेगा इट विल समवॉट लाइक दिस. इट विल बी समवॉट लाइक दिस. ये जो रेड लाइन जा रही है ना, देखो रेड लाइन जो जा रही है, दिस इज योर फाइनल ग्राफ. अब देखो मैंने आपसे कहा था इन 8 केसेस बिना ग्राफ के आंसर आ जाता है. ये बाकी 2 वाला केस है बेटा. व्हाट डिड यू वांट, यू वांटेड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन. आपको दिख रहा है लीस्ट वैल्यू इधर जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है. इट विल गो टू -infinity. सो आंसर टू दिस इज -infinity. फंक्शन का मिनिमम वैल्यू इज -infinity. व्हाट पीपल डू इज, ऑनलाइन वीडियो देख लिया उन्होंने, इक्वेट करना है. इक्वेट कर देंगे, दे विल इक्वेट बोथ इक्वेशंस. x को इधर भेज दिए, x इज इक्वल टू 9 पुट कर देंगे, आंसर आ गया. गलत आंसर है बेटा. The answer to this question is this. It will go to -infinity. The minimum value of the function is -infinity. Take your time, understand this, copy this down. Let me know आपको समझा क्या. क्लियर है ये.
नेक्स्ट वन, ये कैट का रेप्लिका है एंड यू विल नॉट बिलीव सिंस 2020 टिल 2023 कम से कम 3 से 4 बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, सिमिलर वर्डिंग, सिमिलर लैंग्वेज। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स इज मोर देन 0। यहाँ पे कंडीशन लगा दिया। अभी बेटा ये AMGM नहीं है, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। एंड अगेन वो y1 y2 क्या करना, देखो x इज व्हाट, पॉजिटिव, फोकस ओनली ऑन दिस। देयर आर टू सेपरेट ग्राफ्स, ये अलग ग्राफ है और ये अलग ग्राफ है, फोकस ऑन द फर्स्ट वन। देखो x को 0 कर देंगे तो y विल बी इक्वल टू 2, x को 1 करेंगे तो y विल बी 3, x को 2 करेंगे तो y विल बी 6, मतलब इसके बाद y विल इंक्रीज वेरी फास्ट, ऐसा y बढ़ेगा। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन द राइट साइड। ये कौन सा ग्राफ है, ब्रैकेट 1 वाला, दिस इज y1। ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा, when I make x is equal to 0, y will be equal to 6। अब जैसे जैसे x बढ़ेगा this will start to decrease, ऐसा ग्राफ बनेगा आपका। Now what is written outside the bracket, क्या लिखा है यहाँ पे, मिनिमा। मिनिमा मीन्स लोअर वैल्यू। आई एम स्टैंडिंग हियर ऑन द राइट साइड, कौन सा वैल्यू लोअर है, दिस ग्रीन लाइन इज लोअर। तो ये इफेक्टिव ग्राफ है आपका, दिस इज योर ग्राफ ऑन द राइट साइड। ऊपर का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, डोंट इवन कंसिडर दैट। अभी लेफ्ट साइड में कौन सा ग्राफ लोअर है, ये वाला कर्व वाला, दिस इज योर ग्राफ। तो अल्टीमेटली ये आपका ग्राफ है, द वाइट ग्राफ दैट यू सी, ये आपका ग्राफ है। तो ये उसका पीक है। तो ये पीक कहां पे आया, बाय इक्वेटिंग both. If I rearrange, I will have x square plus 3x minus 4 is equal to 0. This looks like to me as 4 minus 1 and this looks like to me as 4 into minus 1. तो ये रूट्स नहीं है बेटा, these are not the roots. What are the roots? X is equal to minus 4 is a root and x is equal to 1 is a root. हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, x is पॉजिटिव। तो x is equal to 1 ये वाला पॉइंट है, इसके नीचे वाला पॉइंट x is equal to 1 है। हमें ग्राफ का वैल्यू चाहिए, तो यू नीड टू पुट 1 इन बोथ, दोनों में 1 पुट कर दो, पहले में कर दो, 2 + 1 स्क्वायर 3। दिस इज योर आंसर, दिस इज द पीक ऑफ द ग्राफ। ये यहां से बढ़ के फिर राइट साइड में डिक्लाइन हो रहा है, दिस इज द पीक ऑफ द ग्राफ, मैक्सिमम ऑफ द ग्राफ। क्लियर है ये? Good. Moving on.
Now again you see such a question, start plotting the graph. Graph से start करो आप. Here it says find the minimum value of the function. कुछ नहीं कहा, x is positive, negative, कुछ नहीं कहा, nothing of this nature has been mentioned. So this is y-axis, this is x-axis. Can you factorize this? देखो, can you factorize this? 15 का square 225 minus 4 into 2 into 18, that is 8 into 18, that is 144. तो ये आपके पास आ गया 181. So root over is 9. So I'm trying to find roots. ये ऐसा दिख गया मुझे, ये फैक्टराइज हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18. जब भी सामने कोएफिशिएंट होता है तो आखिरी मल्टीप्लाई कर दो. सो a प्लस b इज इक्वल टू प्लस 15, ये प्लस बन जाएगा. a इंटू b इज इक्वल टू 36. दिस लुक्स लाइक 12 इंटू 3, 12 प्लस 3. लेकिन जो आपके रूट हैं वो 12 और 3 नहीं है. योर रूट्स आर 12/2 एंड 3/2. जो सामने का नंबर होता है वापस रीयूज के डिवाइड करते हैं. सो योर ग्राफ विल कट द एक्सिस एट 3/2 एंड 6/2. x इज इक्वल टू 0 पे ये 18 होगा. सो दिस वाइड कर्व इज द ग्राफ 1, इक्वेशन 1. ये पॉइंट है 3/2, ये पॉइंट है आपका 6 एंड दिस इज प्लस 18. Now how do you plot the second one? x को 0 कर दिया तो y is equal to क्या आ गया, -12 आ गया. x को 12 कर दिया, x को हमने 12 कर दिया तो y is equal to 0 आ जाएगा. तो ये राइट साइड में कहीं जाकर कट करेंगे. अगर कट किए तो इफ दे कट, बहुत आगे जाकर कहीं ये कट करेंगे, ऐसा ऐसा कहीं पे राइट साइड में दे विल कट. तो मैं प्लॉट नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं इक्वल करके इक्वल बनता है क्या. 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू x माइनस 12. x को इधर लेकर आ गए. 2x स्क्वायर माइनस 16x, इसको लेकर आ गए 30 इज इक्वल टू 0. x कॉमन हो गया, x इज आउटसाइड दिस नाउ. 2 कॉमन हो गया, 2 कैंसिल हो गया. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. So here what we have is, if you see in this case, this can be written as 3 into 5 and this is 3 plus 5. So x is equal to 3 is a root and x is equal to 5 is a root. X is equal to 3 and x is equal to 5 is a root. Check my calculations. क्योंकि 3 और 5 कैनॉट बी द रूट्स. ऐसा कट करेगा, ये ऐसा कट करेगा, ऐसा कट करेगा. समवेयर हियर इज 3 एंड हियर 5. ये x का वैल्यू है बेटा, दिस इज वैल्यू ऑफ x. यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 है और यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 है. अब ग्राफ प्लॉटिंग पे अच्छे से ध्यान देना. दिस इज अ फेयरली एडवांस क्वेश्चन. इस इंटरसेक्शन के लेफ्ट साइड में हमें क्या चाहिए, मैक्स. मैक्स मीन्स ऊपर. तो ये ग्राफ आ रहा है आपका ऊपर से. दिस ब्लू ग्राफ दैट यू सी आई एम ड्रॉइंग थ्रू डैशेस, दिस ब्लू ग्राफ, ये यहां तक आएगा, यहां तक. अब कौन सा ग्राफ ऊपर है, इज द लाइन अबव और इज द वाइट कर्व अबव, येलो लाइन. तो जो चीज ऊपर है वो एग्जिस्ट करेगी, वो काउंट करनी है आपको. ये ऐसा ब्लू ग्राफ आएगा, फिर ये ग्राफ जाएगा. अब आप देख के बताओ, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. उसमें लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये. दिस इज द लोएस्ट पॉइंट. आप x इज इक्वल टू 3 इसमें रखो चाहे इसमें, बात एक ही है. जो फंक्शन का
मिनिमम वैल्यू है, इट विल बी व्हेन यू पुट 3, आइदर इज दिस और दिस, किसी भी एक में करो, आंसर विल बी सेम। इसमें करना आसान लग रहा है, 3 minus 12, तो दिस इज योर आंसर। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू इज -9, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू इज -9। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू इज -9। Confirmation on this? तो ये डिफिकल्ट क्यों हो गया? यू हैव टू ड्रॉ पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ, देन रफली ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, मेक देम इक्वल, एंड देन प्लॉट द ग्राफ दैट यू नीड, क्योंकि बाहर में मैक्स लिखा है। मैक्स मीन्स अपर ग्राफ विल मैटर। इंटरसेक्शन के लेफ्ट साइड, मैं इसके लेफ्ट साइड में गया, लेफ्ट साइड में अपर ग्राफ वाज द वाइट लाइन, वाइट कर्व। फिर राइट साइड में गया तो देखो, फॉर अ मोमेंट वाइट लाइन वाज अबव, देन वाइट कर्व वाज अबव। ऐसा ये जो ब्लू रंग का बन रहा है, ये दिस इज योर फाइनल ग्राफ, दिस इज योर फाइनल ग्राफ, दिस इज योर फाइनल ग्राफ। Confirmation on this? Good. अब देखो, मैंने क्यों कहा था ग्राफ प्लॉट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास 3 टर्म्स हैं। I can assure you, if you post this question online now, I can assure you 9 out of 10 people can't answer it correctly. Nine out of 10, I'm saying, can't answer it correctly. क्यों डिफिकल्ट है? आपको 3 इक्वेशंस का इंटरसेक्शन निकालना है। दे आर ऑल लीनियर इक्वेशंस, आई अंडरस्टैंड दैट, बट 3 को मैच करना, फिर तीनों में इंटरसेक्शन देख के देखना विच वन इज अबव, विच वन इज बिलो। क्या लिखा है? मिनिमम, फाइंड मिनिमम, मिनिमम ऑफ द ग्राफ, मिनिमम ऑफ द इक्वेशंस।
दिस वन आई एम कॉलिंग y1. पहले एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं. दिस विल बी 0 और रादर मेक x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 मिल गया अपने को. y इज इक्वल टू 3 आ गया. When I make y is equal to 0, x is equal to minus 3 by 2. So this golden orange is our graph 1. y1. When I put x is equal to 0 in this, ये second graph है y2, second graph y2. When I put 0, y will become 5. y will become 5. अब y को 0 करना है. देखो लिखना पड़ता है, लिखो. If I make y is equal to 0, this will become minus 5 by 3x is equal to minus 5. Cancel, cancel. X is equal to 3. तो ऐसा सा एक इक्वेशन आएगा, ऐसा सा ग्राफ आएगा. दिस इज x is equal to 3, y is equal to 5. दिस इज ग्राफ 2. ये 0 कब होगा? x is equal to 0 पुट करो पहले, तो y is equal to 4. बिल्कुल बीच में यहां कहीं पे y is equal to 4. Now 4 by 3x plus 4 is equal to 0. y को 0 कर दिया मैंने. 4 by 3x is equal to minus 4. Cancel, cancel. x is equal to minus 3. तो ना ये थोड़ा सा टिल्टेड सा बनेगा. अब क्योंकि ये टिल्टेड बनेगा, देखो अभी जो लाइन बनने वाली है, ये वाली लाइन, इसका जो स्लोप है, स्लोप ये ग्रेडियंट इससे कम है. मतलब कि ये लाइन धीरे धीरे बढ़ रही है, ये लाइन तेजी से बढ़ रही है. तो बेटा ग्राफ ना कुछ ऐसा बनेगा. ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये रेड वाले के बाद कट करेगा येलो को, येलो वाले के बाद कट करेगा रेड को. मे बी यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज इट. आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ इट प्रॉपरली, क्योंकि इसका ग्रेडियंट है 1.33, स्लोप कहते हैं, और इसका ग्रेडियंट ट्वाइस है, ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है ये येलो वाला. तो ये इसके नीचे कहीं कट करेगा, ऐसा कुछ कट करेगा, टिल्ट बनेगा. अब कितना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, तो आप ध्यान दो. सबसे पहले तो मैंने ये वाला इंटरसेक्शन पकड़ा, इसके लेफ्ट साइड में. व्हाट इज ऑन द लेफ्ट साइड? मुझे मिनिमम चाहिए. नीचे वाला ग्राफ कौन सा है? येलो. दिस व्हाइट कर्व विल रिमेन. ये व्हाइट कर्व रिमेन होगा. इसके राइट साइड में देखो, इस इंटरसेक्शन के राइट साइड में देखो, विच इज द लोअर वन? रेड वाला. बेसिकली आप दो लाइन पकड़ लो. ऑन द लेफ्ट साइड येलो नीचे की तरफ है, ऑन द राइट साइड क्या नीचे की तरफ है? रेड नीचे की तरफ है. we never have blue line below anything. ब्लू लाइन किसी के नीचे नहीं है. अब ना बेटा आपको प्रॉब्लम ये है कि इंटरसेक्शन जो है वो किसका लेना है, क्योंकि इट्स वेरी हॉच पॉच ग्राफ. यहाँ पे बहुत हॉच पॉच है. अब इनको दो दो करके इक्वेट करो और चेक करो लोअर वैल्यू कौन दे रहा है. वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम. मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है? 2x plus 3 मैंने इक्वल कर दिया -5 by 3x plus 5 के. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. 6x plus 9 -5x plus 15. ये इधर जाएगा 11x, ये इधर जाएगा 6x is equal to 6 by 11. 6 by 11 रख के देखो इसमें, पहले वाले में 2 into 6 by 11 plus 3, ये हो गया 12, ये हो गया 33, 45 by 11. रहने दो इसको अभी, इसको लीव इट देयर. हमें क्या चाहिए? मैक्सिमा चाहिए. अब मैं फर्स्ट और लास्ट देखो, क्योंकि इन दोनों को इक्वेट कर चुके हो आप. वैसे ब्लू हमको यूज करना नहीं चाहिए था, बट ठीक है. सेकेंड और लास्ट को इक्वेट करो. इक्वेट द अदर टू. -5 by 3x plus 5 is equal to 4 by 3x plus 4. ये कट के इधर आ जाएगा -1. अब दोनों साइड 3 मल्टीप्लाई कर दो. -5x plus 3 is equal to 4x. इसको इधर भेज दो 9. x is equal to आ गया 1/3. 1/3 पुट करो, किसी भी 1/3 पुट करो, इसमें पुट कर दो 1/3.
तो ये क्या बन जाएगा, आई एम डूइंग इट हियर, ये हो जाएगा आपका 4/9 प्लस 4, ये होगा 36 प्लस 4, 40/9। ये वैल्यू है 4.44 और ये वैल्यू है 4.0909। तो बेटा ये आपका मैक्सिमा आ गया। इतना क्लोज नहीं आने चाहिए इक्वेशन किसी भी एग्जाम में। आई वाज व्हेन आई वाज क्रिएटिंग दिस क्वेश्चन आई वाज ट्राइंग टू टेल यू अ पॉइंट, शो यू अ पॉइंट कि ग्राफ बनाने से ही बनेगा ये ग्राफ बनाने से ही बनेगा बेटा। लुक एट दिस, ब्लू वाला जो ग्राफ है कभी भी किसी के नीचे नहीं है। तो जो पहला वाला इक्वेशन ब्लू वाला वॉज, पहला वाला कभी भी किसी काम का नहीं है आपके। सेकेंड थर्ड से पीक मिल जाएगा आपका, आंसर सेकेंड थर्ड से आ रहा है 4.44। इज दिस क्लियर? कंफर्मेशन ऑन दिस? आंसर आपका सेकेंड एंड थर्ड ग्राफ से ही आया, देखो आप। क्लियर है, मूविंग ऑन। It's a very old cat question. It's a very old cat question. Take 2 minutes, give it a try, give me answer. देखो, PQRS before integers,
integers can be positive, negative, such that p plus q plus r plus s is equal to 4k plus 1, where k is a positive integer, or I could have said natural number. So k could be 1, k could be 2, k could be 3, anything. Which one of the following is necessarily true? इनमें से कौन सा true है? Others may be false, but one of them is 100% true. What do you see in every option? P Q R S का square. Every option has that. कभी minimum बोल रहा है, कभी maximum बोल रहा है. So my job is to work with P Q R S. And again, I am telling you, 8 out of 10 questions इस तरह के बनते हैं. इनको नजदीक से नजदीक लाओ और keep them as far as possible. दोनों चेक कर लो. एक में मैक्सिमम मिलता है, एक मिनिमम मिलता है. वन गुड थिंग इज k हैज बीन टोल्ड टू अस एज पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं शुरू k से कर रहा हूं. p प्लस क्यू प्लस r प्लस s. मैंने k को 1 ले लिया. वैल्यू बिकम्स 5. नाउ बिकॉज these are integers, I cannot make it by 4 by 4. It's not possible. ये 4 का मल्टीपल कभी नहीं आया क्योंकि ये ऑड नंबर है. इट्स ऑड नंबर. तो मैंने लिया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2. इससे नजदीक आई कैन नॉट ब्रिंग देम. अब मैंने स्क्वायर कर दिया. p का स्क्वायर, q का स्क्वायर, r का स्क्वायर एंड s का स्क्वायर. आई गॉट 7. लीव इट देयर. मैंने बराबर करके देख लिया क्या होता है. अब जब मुझे दूर ले जाना है इनको, व्हेन आई वांट टू टेक देम अपार्ट. आपने इंटीजर कहा था. इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है. आई कुड हैव टेकन -100 प्लस 0 प्लस लेट अस से प्लस 100 प्लस 0. मर्जी आपकी, कितना भी दूर कर लो. अब जब आप स्क्वायर्स करोगे, व्हेन यू नाउ परफॉर्म स्क्वायर्स, तो पता नहीं कहां टेंस ऑफ थाउजेंड्स में चला जाएगा. आप 100 की जगह 1000 कर लो, मिलियन कर लो, इन्फिनिटी कर लो. माइनस इन्फाइनाइट प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 लो. अब तो स्क्वायर इन्फिनिटी में चला गया. अब तो जो स्क्वायर इन्फिनिटी चला गया, तो आई फील मैक्सिमम वैल्यू कैन गो टू इन्फिनिटी. What I can find for sure is 7, क्योंकि मैक्सिमम इनडिटरमाइनेबल है. तो ये क्या मिल रहा है आपको? मिनिमम. सो आंसर इज आइदर दिस और द आंसर इज दिस. मैक्सिमम इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी. देखो 1 पुट करके इनफाइनाइट बन सकता है क्या? ये नहीं. अब इनमें 1 पुट कर देखो 7 कौन बन सकता है. व्हेन आई पुट 1 हियर, 4 minus 2 plus 1, which is equal to 3, and here 4 plus 2 plus 1, which is equal to 7. So your answer is B, Bombay. अब AMGM का भी इंटरनल वर्किंग यही है. यू ट्राई टू मेक नंबर्स इक्वल, लेकिन AMGM डज नॉट मेक श्योर द इंटीजर्स. वो सबको बराबर कर देगा. AMGM विल मेक एवरी नंबर 5/4. वो हर किसी को 5/4 बना देगा. तो फिर इंटीजर फेल हो गया ना. तो ये क्वेश्चन फ्रेम ऐसे हुए. यू नीड टू अंडरस्टैंड AMGM कब लगे कब नहीं लगेगा. द राइट साइड इज 4k प्लस 1. लेफ्ट साइड देयर आर 4 इंटीजर्स. ये कभी भी 4k प्लस 1 नहीं हो सकते इफ दे आर ऑल इक्वल. इफ दे आर ऑल इक्वल दे कैन बी 4k बट नेवर 4k प्लस 1. ऐसे क्वेश्चन में व्हाट आई डिड इज आई रिप्लेस्ड वैल्यूज. आई रिप्लेस्ड कपल ऑफ वैल्यूज. आई रिप्लेस्ड k इज इक्वल टू. अब k इज इक्वल टू 2 भी करोगे, you need to try 2 things. You need to try, one, bringing them closer. I am saying closer, or keeping them as far as possible. हमेशा इनमें से एक मैक्सिमम और एक मिनिमम आपको दे ही देगा. I can show you numerous questions in different exams.
कंफर्मेशन ऑन दिस। बेटा ऊपर बताया ना बेटा, ये एएमजीएम का सवाल है ही नहीं। एएमजीएम डज नॉट केयर नंबर इंटीजर है या नहीं है, इट सिंपली मेक्स देम इक्वल। राइट साइड इज 4k plus 1, right side is 4k plus 1, left side there are four numbers, it will never be 4k plus 1। ये बेटा आपका एएमजीएम का क्वेश्चन, दिस इज योर एएमजीएम क्वेश्चन। अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो आप देखो। एबीसी आर पॉजिटिव, एडिशन हैज बीन गिवन। अगर एडिशन गिवन होगा तो जो मल्टीप्लिकेशन है उसका मैक्सिमा मांगा जाता है। देखो, इट मैचेस ऑल कंडीशंस। एबीसी आर पॉजिटिव, चेक। एडिशन इज गिवन, चेक। मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमा करना है। इसका रिवर्सल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इज गिवन और एडिशन का मिनिमा मांगेगा आपसे कभी भी। ये कंडीशंस हैं। तो देयर आर टू वेरिएशंस टू दिस। तीसरा कोशी-श्वार्ट्ज है, यूजलेस है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू इन कैट प्रिपरेशन। अपना ईगो सेटिस्फाई करना है तो आप कर सकते हो। और ये भी ज्योमेट्री वोमेट्री में यूज होगा। व्हेन वी कवर दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आई टेल यू सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, वहां पे काम आएगा आपको ये। राइट नाउ ये क्वेश्चन आप ट्राई करो एक बार, स्क्रीन पे है आपके सामने। In the last lecture theory, we have seen couple of questions of this kind. अब केवल आपको ये करना है, यू नीड टू फोकस ऑन द पावर ऑफ द टर्म्स ए बी एंड सी। पावर इज वन, पावर इज वन। इसको कुछ नहीं करना है। ये ए एक टर्म है, ये टू बी कंप्लीटली एक टर्म है, एंड दिस इज 3c, ये पूरा एक टर्म है। क्योंकि पावर इज वन, कुछ डिवाइड नहीं करना है। तो ये एक टर्म और एक टर्म, सो डिवाइडेड बाय 3। अब आ गया आपका अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज मोर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, मोर देन और इक्वल टू, क्योंकि तीन नंबर्स हैं, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इधर आपके पास होगा क्यूब रूट, क्यूब रूट ए इंटू 2b इंटू 3c। अब ये किसके बराबर है, व्हाट इज दिस इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 12। सो 12 बाय 3, 4, मोर देन इक्वल टू। बार बार क्यों लिखना, आप लिख लो आप यहाँ पे, ये देखो, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू ए बी सी। अब जब ये क्यूब रूट हटेगा, इट विल बिकम अ क्यूब ऑन द अपोजिट साइड। सो 2 इंटू 3 ए बी सी। ये क्या है, 64, 64 अपॉन 2, 32 बाई 3 इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये आपका मैक्सिमम आ गया। ये एएमजीएम है बेटा, दिस इज एएमजीएम। तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वो लगेगा कि नहीं लगेगा। कंफर्मेशन ऑन दिस, ये समझा क्या आपको, डिड यू अंडरस्टैंड दिस?
मूविंग ऑन। अभी पिछले क्वेश्चन में यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, समझो डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब इनमें से मिनिमम वन वैल्यू इज अ फ्रैक्शन, कम से कम एक वैल्यू तो फ्रैक्शन है ही है। तो एएमजीएम डज नॉट केयर अबाउट इंटीजर है नेचुरल है, वो सीधा इक्वेट कर देता है। इंटरनली कैसे इक्वेट करता है, दैट ऑल्सो हैव कवर्ड इन द थियोरी इन द अर्लियर सेशन। अभी यहां पे व्हाट इज बीइंग सेड, हमें ए क्यूब बी स्क्वायर सी, अब हमें इसका मैक्सिमा चाहिए। व्हाट दिस मीन्स इज, ये जो a है इट इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स a and b is multiplied 2 times and c is multiplied 1 time। तो लैंग्वेज समझना, ये जो पावर होती है, दिस पावर इज यूज्ड टू ब्रेक दीज टर्म्स। जो a है वो 3 हिस्सों में टूटेगा, a/3 a/3 a/3, क्योंकि मेरे को 3 टर्म्स चाहिए a के। और ये जो b है इट विल ब्रेक इन 2 पार्ट्स, क्योंकि ऑलरेडी 2 का मल्टीपल है, तो आई कैन सिंपली से b प्लस b, हो गए 2 हिस्से, दीज आर 2 पार्ट्स। और जो c है, c उसका पावर 1 है, तो c को ब्रेक नहीं करना आपको। सो नाउ काउंट, काउंट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डिनोमिनेटर में विल बी 6, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। दिस इज मोर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 6th पावर, 6th रूट ओवर। अब ये सब मल्टीप्लाई होंगे, ऑल दीज विल मल्टीप्लाइड हियर। तो a/3 3 बार मल्टीप्लाई होगा, b 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और c 1 बार मल्टीप्लाई होगा। तो व्हाट हैज द लेफ्ट हैंड साइड बिकम, what has the left hand side become? Left hand side is 18, this same equation, left hand side is 18 by 6 which is 3, more than or equal to 6th रूट ओवर। अभी देखो a का क्यूब अलग कर दो तो नीचे क्या आ जाएगा, 1/3 का क्यूब 1/27। बी स्क्वायर अलग कर दो, ये 3 आगे आ जाएगा और पीछे c लगा दो, ऐसा। ये हो गया आपका बाय 9। अब ये 6 इधर चला जाएगा, बिकॉज वी आर टेकिंग सिक्स पावर, तो 3 का पावर 6 इज मोर देन और इक्वल टू 1/3 स्क्वायर। ये 9 क्या होता है, 1/3 स्क्वायर इंटू ए क्यूब बी स्क्वायर सी। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 का पावर 8। अब जो वैल्यू आपके सामने आई है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्या क्या तरीके आइडेंटिफाई करने के, पहला ए बी सी आर पॉजिटिव, पहला मल्टीप्लिकेशन का मैक्सिमम मांगेंगे आपसे, मैक्सिमम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड एडिशन विल बी गिवन फिक्स्ड वैल्यू। ये 3 कंडीशन है तो एएमजीएम है। रिवर्सल, अगर मल्टीप्लिकेशन गिवन होता तो आपसे एडिशन को मिनिमम करने कहते। एडिशंस आर मिनिमाइज्ड एंड मल्टीप्लिकेशंस आर मैक्सिमाइज्ड यूजिंग एएमजीएम। Confirm you are able to keep up with this?
ये समझा? कंफर्मेशन ऑन दिस. Moving on. Take 2 minutes, try this. So learn from the previous example. Left side में जो आपके terms हैं, they should be visible on the right side. Terms must be same on both sides. ये नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. अभी हमसे बोला है इसका मैक्सिमम निकालो. देखो क्या बोला, a is more than 2. If a is more than 2, पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, b is more than 5, ये भी पॉजिटिव, c is more than 1, this also is positive. So you are being told individually every term is positive. मल्टीप्लिकेशन का मैक्सिमम करना और एडिशन का वैल्यू गिवन है, तो एएमजीएम ऐसे पकड़ना, हर चीज में एएमजीएम थोड़ा लगेगा. देखो, सो लेफ्ट साइड में आई विल राइट सेम टर्म्स, a-2 प्लस b-5 प्लस c-1. ये 3 टर्म्स है तो डिवाइडेड बाय 3, मोर देन और इक्वल टू क्यूब रूट. यही टर्म्स आएंगे, a-2 b-5 c-1. Terms must be identical on both sides. So a plus b plus c, that is 10. 10 minus 2 8 minus 5 3 3 minus 1 2. तो ये 2/3 बन गया. देखो 2 स्टेप बच गए आपके. अब ये क्यूब इधर आ जाएगा. ऐसा ऑलवेज थिंक अबाउट द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट स्टेप. You will be able to save a lot of time in CAT. तो ये आपका आ गया मैक्सिमा. Maxima is 8/27 for what? a-2 b-5 and c-1. ये मैक्सिमा आ गया आपका. देखो लिखो इसको, सीखो इससे.
मूविंग ऑन, एक और अप्रोच है. नाउ दिस आई एम गोइंग टू यूज इन मल्टीपल क्वेश्चंस इन फ्यूचर, वो भी सीखो. Now AMGM works by internally making terms equal. तो ये जो a-2 है ये बराबर होना चाहिए b-5 के, ये बराबर होना चाहिए c-1 के. क्योंकि पावर 1 है सबकी, आई कैन डायरेक्टली मेक दम इक्वल. जब पावर स्क्वायर की वो कुछ और करना पड़ता है. So if these are equal, let us say they are equal to k, तो a का वैल्यू क्या होगा, k+2. मैं यहां पुट कर रहा हूं k+2. ये b का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर 5 भेजेंगे तो k+5. c का वैल्यू क्या हो जाएगा, k+1. ये मैंने a का, b का और c का वैल्यू इक्वल टू के 10 कर दिया. सो व्हाट आई हैव इज 3k plus 8 is equal to 10, k is equal to 2/3. ये खुद 2/3 के बराबर है, ये ब्रैकेट 2/3 के बराबर है, ये भी 2/3 के बराबर है. तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या चीज के बराबर होगा, 2/3 के क्यूब के बराबर होगा. दे आर इंडिविजुअली दे आर 2/3 2/3 2/3. तो 8/27 इज द प्रोडक्ट. समझाइए अपने को. सेकेंड पार्ट आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस लिटिल मोर. ये वाला ट्राई दिस. अब थोड़ा संभल के. दे आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स. इंटीजर्स तो गलती से भी AMGM लगाने का जिद नहीं करना है. इंटीजर्स बोल दिया है, ये नहीं ख्याल करता इंटीजर है, फ्रैक्शन है, सर्ड है, ये बराबर कर देगा. यहां इंटीजर बोला, डिस्टिंक्ट बोला, डिस्टिंक्ट. AMGM सबको बराबर कर देता है. इट ट्राइज टू मेक टर्म्स इक्वल. AMGM अब मैंने तो आपको इक्वल करके दिखाई. ये ब्रैकेट दे आर ऑल इक्वल टू k इज इक्वल टू 2/3. देखो इधर का आंसर मैचेस ब्यूटीफुली. AMGM इंटरनली मेक्स थिंग्स इक्वल. वो किसको इक्वल करता है वो सीखने में टाइम लगेगा आपको. यहां पे डिस्टिंक्ट वर्ड बोला. तो वापस जाओ वही वाली अप्रोच पे. मैन्युअली यू ट्राई टू ब्रिंग देम क्लोज और यू ट्राई टू कीप देम एज फार एज पॉसिबल. जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखो
or you try to bring them as close as possible. करके देखो, हाउ कैन यू मेक देम एज क्लोज एज पॉसिबल. हमको डिस्टिंक्ट भी रखना है एंड कीप देम एज फार एज पॉसिबल. दोनों करके देखो आप. अभी मैक्सिमम मांग रहे हैं आपसे, क्या पता मिनिमम मांग लेते. बोथ कुड बी आस्क्ड. ट्राई. देखो, व्हाट यू नीड इज, यहां लिखता हूं मैं, x इंटू वाई इंटू जेड प्लस x इंटू वाई, y इंटू जेड, z इंटू एक्स. देखो, देर इज अ काइंड ऑफ सिमेट्री इन द प्रोडक्ट. कुछ है सिमेट्री जैसा. What has been given to you, x plus y plus z is equal to 10. अब इनको नजदीक कैसे ला सकते हैं. मैंने आपसे कहा, you try to bring them close, you try to keep them far apart. देखो, is it a multiple of 3? No. Multiple of 3 होता तो it will be 3 3 3. सही जा रहे हैं. अब डिस्टिंक्ट बोल दिया, अभी मेरे पास 10 है तो मैंने इसको +1 दे दिया. इट बिकम्स 3 3 4. अभी भी प्रॉब्लम. व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? ये दोनों बराबर है. टू मेक इट डिस्टिंक्ट, अब देखो, मैं इसको कम करके इसको दूंगा तो फिर से 4 बन जाएगा, या इसको कम करके इसको दूंगा तो फिर से 4 बन जाएगा. दे विल बिकम इक्वल. तो मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूं 1 से, और मैं वो वाला 1 इसको दे रहा हूं. द वैल्यूज बिकम 2 3 5. अंडरस्टैंड, फुलफिलिंग दीज कंडीशन डिस्टिंक्ट, इससे नजदीक नहीं हो सकते थे नंबर. Numbers could not be closer, fulfilling the condition distinct. अब लगाओ 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5, that is 30. लगाओ 2 into 3, 6, 3 into 5, 15, और ये क्या, z into x, 2 into 5, 10. What addition am I getting? 30, 40. एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो. 2 3 5 30, yes. 2 into 3 6, 3 into 5 15, 15 plus 10, तो ये हो गया 40, 40 plus 21, that is 61. अब ये मैक्सिमा है कि मिनिमा, वी डू नॉट नो. ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है. 2 3 5, एडिशन इज 10. नाउ आई विल कीप देम एज फार एज पॉसिबल. ये कैसे कर सकते हैं? डिस्टिंक्ट भी करना है. मैंने एक को ले लिया 1, एक को ले लिया 2, कितना बच गया 7. उसको अलग कर दो, that is 10. You want to try more variations of this? अगला 2 3 5 में बनेगा ना बेटा, और ट्राई करना है 1 + 3 + 6. और वेरिएशन ट्राई करने हैं 1 + 4 + 5. मैंने आपके सामने 3-4 वेरिएशन लगा दिए बेस्ड अपॉन द गिवन कंडीशंस. अब इनको पुट करो. देखो, इफ आई पुट 1 into 2 into 7, 1, ये मैं ये चेक कर रहा हूं सीधा. आई एम यूजिंग सेकंड के, सीधा ये ले आते हैं यहां पे. 1 into 2 into 7, this is 14. 1 into 2, 2.
2 into 7, 14. 1 into 7, 7. This is 28 plus 9, 37. Value और कम हो गई ना. Use 136. 1 into 3 into 6, 18. 1 into 3 मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ. देखो 1 into 3, 3. 3 into 6, 18. 1 into 6, 6. ये हो गया 36. 36 plus 9. 36 plus 9, 45. देखो तो no number is getting closer to this. तो maximum is 61. 61 is none of these. Under the given conditions, the answer is 61. आपका मैक्सिमा वही है. और मैक्सिमा कब आए? You made them closer. अब ये मिनिमा है आपका. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये मिनिमा है आपका. इससे नीचे कभी नहीं जा पाओगे. When I assume number as 1, 2, बचा हुआ यहाँ डाल दिया. ये दूर से दूर नंबर है. There is a concept called delta. What is the delta among numbers? Division of numbers. कभी आप और हायर मैथ्स पढ़ोगे, you'll come across this. मैं दिखाता हूँ आपको, बट मत यूज करना सब चीजें. इनका डेल्टा 1 है, इनका डेल्टा 2 है और इनका डेल्टा 3 है. तो टोटल डेल्टा इज 6. इनका डेल्टा 1 है, इनका डेल्टा 5 है और इनका डेल्टा 6 है. टोटल डेल्टा इज 12. डेल्टा बढ़ेगा, वैल्यू मिनिमम है. डेल्टा घटेगा, वैल्यू मैक्सिमम है. Confirmation on this? Moving on. PQR are three positive real numbers. Positive real numbers. The number of possible triplets of PQR, ये पूछ रहा है, is if P by Q plus R by Q plus R by P is equal to 2. Positive integers हैं, positive integers हैं. Give it a try. These are positive integers. So what is this particular problem doing in the session of inequalities in maxima minima? जैसे एग्जाम में आ गया तो आप थोड़ा ट्रबल्ड हो सकते हो, बट यहां तो क्लियर इंडिकेशन है कि हमने ये क्वेश्चन कहां डाला है, मैक्सिमा मिनिमा एएमजीएम के सेशन में. तो सोचो, कनेक्ट द टू थिंग्स, कनेक्ट टू डॉट्स.
तो आप यहाँ ये रिलेट करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो. देयर आर थ्री नंबर्स, फॉरगेट दिस टू फॉर द टाइमिंग, इसको भूल जाओ फॉर द टाइम बिंग. P by Q, Q by R, R by P. मैं इसको एक नंबर, ये 1, ये 2 और ये 3, तीन नंबर्स हैं, डिवाइडेड बाय 3. इनको बोला ना, देर पॉजिटिव रियल नंबर्स. पॉजिटिव रियल नंबर्स बोला है, फ्रॉम देयर आई गेट आइडिया, कुछ तो AMGM सोच सकते हैं, लगा सकते हैं. P by Q, ये पहला टर्म है, P by Q, Q by R, R by P. थोड़ा ध्यान देना, ये ऐसा, ये A है, ये B है, ये C है, तो ये A इंटू बी इंटू सी क्यूब रूट. तो ये क्यूब रूट में कट गया ना, ये सारा कट गया, कितना बन गया अंदर में 1. तो ये जो है आपका P by Q, Q by R, R by P, दिस इज मोर देन और इक्वल टू 3 इंटू 1. ये वाला 3 कौन सा है, इधर का 3 उधर जा रहा है, क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा. तो ये जो आपने लिखा है P by Q, Q by R, R by S, ये 3 या उससे बड़ा होना चाहिए. सो इसका मिनिमम वैल्यू इज 3. अगर इसका मिनिमम वैल्यू इज 3, तो ये कभी 2 हो ही नहीं सकता. देर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर PQR विच आर रियल. PQR कैन नॉट बी, और PQR आर बेसिकली नॉन रियल. अगर ये आपको ट्रू करना है, ये इक्वल टू 2, ये यू वांट टू मेक इट टू इक्वल टू 2, PQR कैन नॉट बी रियल. For real values, for positive values, the minimum outcome is 3. बुरे से बुरे हाल में, और 3 भी कब बनेगा वो भी आप सीखो. एंड दे आर ऑल इक्वल. P अपॉन Q कैंसिल होके 1 बन जाएगा, Q अपॉन R कैंसिल होके 1 बन जाएगा, R अपॉन S. तीनों बराबर होंगे तभी 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा. तीनों को 1 होना जरूरी नहीं है, दे कुड बी एनीथिंग, दे कुड बी एनीथिंग. तो अगर मैं इसको राइट साइड में 3 कर दूं, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, एज लॉन्ग एज PQR बराबर है. If I make it 3, PQR बराबर है, there are infinite possibilities. PQR can be 1, 2, 3, 4, 5, they could be anything. क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर का है, they could all be 1.1, they could all be 2.2, they could be anything. So infinite possibilities are there. कंफर्मेशन ऑन दिस, समझा आपने को. ये AMGM है, कैसे हिंट लगा, PQR आर पॉजिटिव रियल नंबर्स. अदरवाइज मोस्ट पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. ये AMGM में अप्रोच कर सकते हैं हम इसको, LCM लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, इट विल बिकम अ वेरी लार्ज और ह्यूज कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन. That's it. Done for a day. इस पे कंफर्मेशन दो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. कुछ रिपीट करना है. Yeah, done for tonight. Yeah, right.